यहाँ पर आज चल रहा है एक इवेंट यंग-डंडास स्क्वायर में, टोरंटो के डाउनटाउन में। सेलेस्टिया इवेंट का नाम है। अभी 6 PM होने वाले हैं, तो यहाँ पे एक इवेंट स्टार्ट होने वाला है। लेट्स सी कि इस इवेंट में क्या होगा। We got a lot of great music, we got a lot of fun that's happening, but Sri Lankan Canadian musician. Probably buying her some fruity little drink, cause she can't still get the leather seat. Give it up for Rosina B. Solomon. I've been low lately, wonder how that could possibly be. Hey girl will always fix her man. Give it up for Tyrone Traher. Oh, you're a problem that I don't understand. This fire. I guess this is the first thing that I finished writing after my father died. My father died, and I felt like I had fucking nothing. My faith is strong, but my flesh is weak. It's about loving someone like a fetish. I think मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला हूँ जो ये इवेंट कवर कर रहा है। Because I'm telling you something. If you come on over now and see these great artists, in about a year or so, you're going to be going, thank goodness I saw them here at this time. Because in about, a year from now, you're going to have to pay some big-time tickets to see these acts. This is why we put them on here. We are celebrating artists from Toronto. These are the next generation of superstars. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जियान और बखैर अगले। यहाँ पर आज चल रहा है एक इवेंट यंग-डंडास स्क्वायर में, टोरंटो के डाउनटाउन में। सेलेस्टिया इवेंट का नाम है। तो ये आप लाइट्स देख सकते हैं, लाइट्स लगी हुई हैं थोड़ी सी, और स्टेज बना हुआ है छोटा सा। अभी 6 PM होने वाले हैं, तो यहाँ पे एक इवेंट स्टार्ट होने वाला है। लेट्स सी कि इस इवेंट में क्या होगा। ये भी मेरा फ़र्स्ट टाइम है इस इवेंट में, इस टाइप के इवेंट में। और इस विंटर में 2025 में ये फ़र्स्ट इवेंट है जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है यंग-डंडास स्क्वायर में। तो अभी विंटर्स के बाद यहाँ पे बहुत सारे और फेस्टिवल आने वाले हैं, क्योंकि समर में यहाँ पे हर रोज़ या हर वीक एक ना एक फेस्टिवल होता है। तो अभी 2025 जब से स्टार्ट हुआ है, तो ये सेलेस्टिया यहाँ का फ़र्स्ट इवेंट है इस स्क्वायर में। इसको बोलते हैं यंग-डंडास स्क्वायर, और इसका न्यू नेम है सनकोफा स्क्वायर, लेकिन लोग अभी भी इसको यंग-डंडास स्क्वायर के नाम से ही जानते हैं। तो लेट्स सी के सेलेस्टिया में हमको क्या देखने को मिलता है। अभी बस 6 o'clock होने वाले हैं, 6 PM। तो फिर थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। आज वैलेंटाइन्स भी है यहाँ पे, तो आई थिंक उस हिसाब से भी यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स होने वाले हैं, परफॉर्मेंस होने वाली हैं सेलेस्टिया फेस्टिवल में। अभी अंधेरा होने से पहले मैं आपको यहाँ का एक क्विक राउंड करके दिखाता हूँ कि सराउंडिंग में क्या व्यूज़ हैं। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा भी है सनकोफा स्क्वायर सेलेस्टिया। तो अभी मैं क्विक एक आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ यहाँ का सराउंडिंग का। फिर यहाँ पे अंधेरा छाने वाला है 10-15 मिनट में, और ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा।
और ये सिंगर्स आने वाले हैं यहाँ पर। म्यूज़िक भी चल रहा है तो मुझे इसके ऊपर नया म्यूज़िक लगाना पड़ेगा नहीं तो कॉपीराइट की स्ट्राइक आएगी यूट्यूब की तरफ से। तो सम टाइम मैं बात नहीं कर पाऊँगा, जब बात नहीं करूँगा तो उस वक्त मैं म्यूज़िक इसमें ऐड करूँगा। और ये है स्टेज, छोटा सा यहाँ पे बना है। और ये 360 का यहाँ पे बूथ लग गया है फ़ोटोज़ लेने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए फ्री बूथ है ये। लोग यहाँ पे आके 360 वाली वीडियो बना सकते हैं इस बूथ पे। सीडीज़ भी लग चुकी हैं लाइट्स की। ये हॉट चॉकलेट का ट्रक है और चोरोस मिल रहे हैं और ये फ्री है, टोटली फ्री है। चोरोस और हॉट चॉकलेट यहाँ पे फ्री मिलेगा सबको जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। अमेजिंग। तो ये छोटा सा इवेंट है, ये अभी बस स्टार्ट होने वाला है कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में एक्चुअली, क्योंकि 6 PM होने ही वाले हैं, 5 मिनट रहते हैं। तो फिर जैसे इवेंट स्टार्ट होगा फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, थोड़ी देर में इवेंट स्टार्ट होगा। लेट्स सी कि ये इवेंट कैसा होने वाला है। So you know, you always got to make sure. Okay, start हो चुका है। Working well. I'll tell you something right now. We've got the best tech crew in the country right here working for us. Hello, everybody. My name is Rudy Blair. I'm a music reporter. I've been doing it for like 30 plus years. I've interviewed a lot of artists. You can check my stuff out at Rudy Blair Entertainment Media, rudyblairmedia.com. I am so happy to be back right here at this square because we got a lot of talent, we got a lot of music, and we got a lot of fun happening here. So I'm thrilled to say this officially. It's the kickoff, the Sankofa Square's Celestia by Kleis and downtown Young BIA's Illuminate Festival. I hope I got that all right. Did I get it all right? I hope I got it right. Ladies and gentlemen, come on over because we've got a lot that's happening here. We got a lot of great music. We got a lot of fun that's happening. But before we get into all the fun, we have to acknowledge the land that we stand on for our ancestors. As we gather here at Toronto, we acknowledge this land is the traditional territory for many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples, and it is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis people. We also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13 with the Mississaugas of the Credit. We honor and celebrate their rich and past, present, and future. We also want to recognize that we are gathered here in Sankofa Square as we acknowledge all treaty peoples, including those who came here as settlers, migrants, either in the generation or in the generation past, those of African descent who came here involuntarily through the transatlantic slave trade and slavery. We pay tribute to these ancestors and their spirit, the resilience, honoring the past to build a better future together. All right, y'all, look, I've got a rep from UNESCO who's going to come up to say a few words. If I can have her come on up, please, and introduce herself.
ओके तो इवेंट स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली 6 PM हो चुके हैं And लेट्स first, सी we're so happy that your company is involved with this. Thank you so much. I'm going to give you the microphone. Thank you so much. So I'm from the city of Toronto. I lead the creative tech office. So we do support for video games, immersive and esports. And I'm also the focal point for UNESCO. So if you didn't know, Toronto is actually a city of media arts as designated by UNESCO. And there's 350 UNESCO designated cities, creative cities around the world, including London, Ontario, which I have a colleague here from as well. So UNESCO is particularly important at this day and age. It was developed after the Second World War to really bring countries and people together through culture to really create a culture of peace. So it's a really valuable network, and if you have any questions about it at all, please let me know. So tonight we're here to really, actually, did you want to say something about London? Hi everyone, my name is Richard Gracious. I'm from the London Music Office. We are a sister UNESCO city, a city of music, and we're very happy to be here at Sankofa Square. Thank you for having us. We have the pleasure of showcasing some of our London artists as we are a city of music and to celebrate the Celestia. So you can tell them a little bit more about that. Yes, so we have music and arts, musicians from London, musicians from Toronto, and then this beautiful artwork behind you. So this is the first Canadian project through the 4 UNESCO cities. So we have Quebec City, which is the city of literature, Montreal, which is a city of design, London, a city of music, and Toronto, a city of media arts. So this is our first collaborative project. We put out a call for artists, and the people that won were Kleis Design, and they created Celestia. So I'm just going to read here so I make sure I don't miss anybody who is involved with it. These come to life with sound and light as spectators approach and interact with them, so please feel free to play with them. They were inspired by the 7 sisters of the Greek myth of Pallades. These modules are unique in color, emotion, and character, representing each creative field that comprises the UNESCO Canadian Creative Cities Network. So this artistic collaboration brings together Caroline Foucher, a Quebecois author and poet, Jerome Guillaume, a sound designer, Yolande Okia-Picard, a Huron-Wendat storyteller and writer, and the Kleis Studio. So we're very excited about this project, and we hope you have a great night, and we hope you have a chance to come out and play with this beautiful project and tell your friends about it. Thank you so much. Thank you so much. So one more time, we got a lot of space over here. So come on over. Anybody who's across the street, come on over. I see folks lining up for hot chocolate. Come on over. I know there are people on the other side. Come on over. Why? This is the place to rock. This is the place to have a good time. And we want to kick things off tonight because we've got a very special artist who's going to just get you moving and grooving. This artist, boundaries pushing like you wouldn't believe, South Asian DJ and producer blending Tamil music with global sounds like Afro beats, Bollywood, electronic music. Ladies and gentlemen, give it up for Lady Pista! Great voice, by the way. I love it. I love it. How's everyone doing tonight? I go by the name of Lady Pista, and I know everyone's getting all warmed up with your hot chocolate, and I'm about to warm you up with some beats. So let me hear some noise if you're ready for it. ओके म्यूज़िक स्टार्ट होने वाला है लोग बिल्कुल भी नहीं हैं जो हैं वो हॉट चॉकलेट की तरफ खड़े हैं यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा स्क्वायर में आप देख सकते हैं सबको हॉट चॉकलेट चाहिए फ्री वाला अभी स्लोली लोग यहाँ पे आना शुरू होंगे तो काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं अभी तो ये स्टार्ट ही हो रहा है इवेंट लेट्स सी कि हमको कौन सा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा मुझे कॉपीराइट का मसला आएगा इसलिए म्यूज़िक हटाना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत लेट्स सी कि ये इवेंट कैसे जाता है ये म्यूज़िक अभी स्टार्ट हो रहा है वार्म अप म्यूज़िक You may write me down in history with your bitter twisted mind. जब तक आप म्यूज़िक सुने मैं आपको हॉट चॉकलेट वाली लाइन दिखाता हूँ
Does my sassiness affect you? Why are you beset with gloom? Just because I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns with the certainty of time. Just like hope springing high. Sorry. Did you want to see me grow? Bowed head and lowered eyes. It's for YouTube. If you want, I will blur your face. No, it's okay. Okay. ये काफी फ्रेंडली थे, बोलते हैं it's okay. Too hard just because I laugh as if I had. ये है फ्री हॉट चॉकलेट और churros और इवेंट अभी स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियली. लेट्स सी. थोड़ी थोड़ी वाइब्स तो बन रही हैं स्क्वायर में. मैं भी लाइन में खड़ा हूँ हॉट चॉकलेट के लिए. हॉट चॉकलेट नहीं है आई थिंक. हेलो हाय. Do you have churros? Yeah, I have churros. You don't have hot chocolate? For right now, no, but there's gonna be like 5 Yeah, just give me churros. Okay, you want a caramel churro? One is enough. Yeah. Yeah. Yes, please. Yeah. Thank you. ओके चोरोस मैंने ले लिया है. हॉट चॉकलेट अभी रेडी नहीं है. ये देखें. ये स्वीट होता है. गरम गरम. वेरी टेस्टी. वेरी वेरी स्वीट. यम्मी. डिलीशियस. इसका टेस्ट बिल्कुल पेड़े की तरह है जो मर्दान में पेड़ा मिलता है. सेम टेस्ट है. Story that I'm telling, so hopefully you get the message in the story as well. But basically, it's about resilience, about getting through hard times. पेड़े से भी अच्छा है टेस्ट. And seeing the bright side of things. So this one and all the stuff that you're hearing is my own compositions. The next one is called Heaven.
after video. Yeah, ciao. ये बॉलीवुड का सॉन्ग है और लोकल आर्टिस्ट है, इसको रीमिक्स किया है लोकल आर्टिस्ट ने। If you're all getting warmed up, I want you to make some noise. Also, please come up all the way to the front. We have some incredible acts coming up soon, so we all need your support. All the artists from Toronto, just come all the way up to the front, enjoy the music, and get warmed up.
watch it, touch it, bring it, touch it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, वाओ अमेजिंग लोकल आर्टिस्ट है इसने काफ़ी खूबसूरती से रीमिक्स किए हैं बहुत सारे सॉन्ग्स अमेजिंग So much. That was my set. Thank you everyone for showing up and showing me some love. I go by the name of Lady Pista, at Lady Pista on Instagram. You can check out my new album if you heard, if you liked any of the songs on there. It's on my album called Sahira that just released. So thank you so much, the city and everyone that supported. Thank you. Amazing. Come on, you know we love this. Ladies and gentlemen, give it up one more time for Lady Pista! Wow, she was amazing. What a way to kick this off. Look, I keep telling those folks across the street, come on over, because not only do we have great free music, and I'm going to use this word free very, very carefully, and a lot too. Why? You know we got hot chocolate over there? Where? And we got churros over there? Right over there. Where? There. Also, we've got a 360 photo booth right over there. People are starting to line up. Head over there. It's free also. Look, get over there. Enjoy yourselves because, look, coming up next, we've got a Juno Award winner who's going to be performing here. Celestia installation, Illuminate Festival, all in this area here, folks. We're going to be back in a couple of minutes. The music is going to continue. We'll see you in a bit. Ooh, तो ये अमेजिंग था लोकल आर्टिस्ट का अपना रीमिक्स म्यूजिक
अभी ब्रेक चल रही है, वहाँ पर नया आर्टिस्ट आने वाला है और फर्स्ट आर्टिस्ट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। आपने सुना उसके म्यूज़िक को, उसने कितनी अच्छी तरह से रीमिक्स किया था। लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, वो बिल्कुल लोकल आर्टिस्ट थी यहाँ की और उसने काफ़ी अमेजिंगली उसको प्रेजेंट किया। लेकिन सैडली लोग बिल्कुल भी उसके पास नहीं थे, क्राउड सारा इधर उधर है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर स्क्वायर में, देखें कितने सारे लोग हैं, लेकिन इवेंट पे कोई भी नहीं आ रहा। और ये वैलेंटाइन भी है, अभी वैलेंटाइंस डे है, तो सब लोग देखें यहीं पर घूम फिर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, गिफ्ट्स के साथ और फ्लावर्स के साथ। तो ये देखें कितने सारे लोग हैं यहाँ पे यंग-डंडास स्क्वायर में, लेकिन जहाँ पे इवेंट हो रहा है वहाँ पर लोग बहुत ही कम हैं। शायद और मज़ीद ज़्यादा आते जाएं। अभी तो एक परफॉर्म हुआ है, एक आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है, अभी 4-5 और रहते हैं। लेट्स सी कि क्राउड जमा होता है या नहीं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और वो जहाँ पे फ्री चॉकलेट और चोरोस मिल रहे हैं वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं। जहाँ पे फ्री मिल रहे हैं वहाँ पर लोग हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सब अपना चॉकलेट और कॉफ़ी लेके, चोरोस लेके जो वापस जा रहे हैं। ये सिर्फ खाने पीने के लिए आए थे यहाँ पर। हालांकि ये ट्रक इस इवेंट के लिए लगा है, फ्री हॉट चॉकलेट और चोरोस ये इवेंट वालों की तरफ से है। लेकिन लोग यहाँ पे क्यू में खड़े होते हैं, अपना हॉट चॉकलेट और चोरोस लेके यहाँ से जा रहे हैं। ये देखें कितनी बड़ी लाइन है। ये लोग सब यहाँ से अपना ड्रिंक या चोरोस लेके निकल जाएंगे। आई थिंक मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला हूँ जो ये इवेंट कवर कर रहा है पूरा, किसी ने भी नहीं कवर किया। इवन बड़े बड़े चैनल्स भी यहाँ पर अभी नहीं आए, वो आने वाले थे। You guys feeling good? Look, I had somebody come over and say to me, no, there's no free hot chocolate. No, there is free hot chocolate over there. So head over, get your free hot chocolate, your churros, warm up, make sure you get your photos done over there. All of this is free, just like the great music we got coming up right here. We've got an incredible artist, Sri Lankan Canadian musician, known for her unique blend of jazz, pop, electronic music, incorporating her captive vocals and trumpet melodies. Also, a Juno Award nominee. We were just talking 2016. And it was in Calgary. And we're trying to figure out if I did a red carpet interview with her. I think I did. But either way, I get to introduce her today. Ladies and gentlemen, give it up for Tara Kannangara! उसकी कमेंट्री। You didn't plan for it to happen, but no, you're keen on my discriminating fashion. I'm not like the other girls that they say. High school romance doesn't mean much in the long run, but if we took it further, I know I could have had some fun. You carry my books and I wear your jacket, cinnamon and sugar on primetime TV.
Give me a B, A, Y, S, I, D, E. सेकंड सॉन्ग ये सिंग करने जा रही है। Affirmations. Mama said I was born lucky, but how will it last? Gotta get ahead of a nuclear blast. I want my psychic to like me, to think that I'm special, to see my potential. He said that I'm a good person, that my heart is sincere. If I'm sweet, baby, I'll hear what I wanna hear. Oh, no, now. Will it save me from catastrophe? Oh, no, now. Will it keep me from turning the night? Alright, impress my therapist, and my doctor says I'm young for my age. I'm doing CBT, I'm taking CBD. I don't need after 7, turn my phone off at 11, 'cause I want a good night's sleep to dream happy dreams. But I still wake at the night, yeah, and was it all on me? It's lonely on the physical realm or social media. Read me the spoilers on my Mr. Wikipedia. You have a good time tonight? ओके, थर्ड आर्टिस्ट आ गई है, नेस। अभी ये नेस है, इससे पहले लेडी पिस्ता था, फिर तारा थी, अभी नेस है। नेस Right now, she's probably all dancing with her bleach blonde trim, and she's probably getting tipsy. Right now, she's probably buying herself a fruity little drink, 'cause she can't shoot a whiskey. Right now, he's probably up behind her with a pool stick, showing her how to shoot a combo. And she don't know that I took my key into the side of this pretty little duped-up four-wheel drive, tied my knife into his leather seat. I took a Louisville slugger to motel line, signed the hole in old boy tires. Maybe next time he'll drink before he Right now, she's probably up singing from a white trash version of Shania karaoke. Right now, she's probably saying I'm drunk, and he's thinking that he's gonna get lucky. Right now, he's probably dumping all $3 worth of that bathroom polo, and he don't know that I dug my key into the side of this pretty little souped-up four-wheel drive, tied my knife into his leather seat. I took a Louisville slugger to both headlines, slapped a hole in old boy tires. Maybe next time he'll pay for peach. I might have saved a little trouble for the next girl, because the next time that he cheats, oh, you know it won't be on me. Oh, maybe next time he'll think before he cheats. No, before he cheats. No. Oh,
नाइस। कोई भी नहीं, Thank you. बहुत कम लोग हैं, कोई भी नहीं है ऑलमोस्ट। देखिए सर्दी ज़्यादा है इसलिए लोग भी नहीं हैं, और वैलेंटाइंस भी है, सब बिज़ी हैं। They say you look pretty, be skinny, have a credit score over 70, but make sure your bank account's not under grand. They say be smarter, work harder, but not enough for you to get farther. Be the best sister, best mother, best lover to your man. क्योंकि वैलेंटाइंस भी है इसलिए भी लोग नहीं हैं, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं साइडों पे काफ़ी सारा रश है, वहाँ पे गुलाब बिक रहे हैं, रोजेज़, तो सब लोग बिज़ी हैं क्योंकि वैलेंटाइन है। लेकिन यहाँ पे आर्टिस्ट के पास कोई भी नहीं है, स्टेज बिल्कुल खाली है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। स्क्वायर में बहुत रश है, लोग हैं, लेकिन जहाँ पे इवेंट चल रहा है, लोकल आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये थर्ड परफॉर्मर्स आई हैं यहाँ पे, आर्टिस्ट। लेट्स सी, मैं थोड़ी देर और रहूँगा, सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पे वीडियो बना रहा है, कोई भी नहीं है। आई एम द ओनली वन हु इज़ मेकिंग दिस वीडियो। ओके, नेस ने एक और गाना ख़त्म कर दिया है। नेस के बाद ये 3 और रहते हैं, फिर रोजीना, ये 3 और रहते हैं। पूरे स्टेज में सिर्फ मैं ही हूँ। We made it. Look how far we come, my baby. No matter took the long way. We knew we'd get there someday. And we said, oh, bet you'll never make it, because look at us holding on. Keep quiet, 'cause we did it, they knew. So close your eyes. Keep us down for a little while. आप देख सकते हैं स्क्वायर में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जहाँ पे इवेंट चल रहा है वहाँ पे बहुत कम लोग हैं। इवन दो लोकल आर्टिस्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर अमेजिंग, लेकिन लोग सब बिज़ी हैं अपने अपने वैलेंटाइंस की तैयारियों में।
लेट्स सी, वापस जाता हूँ मैं अपने इवेंट की तरफ। नेस अभी भी सिंग कर रही है। लेट्स सी कि नेक्स्ट सिंगर फिर कौन सा आता है। अभी -10 सेल्सियस है इस वक्त। थैंक गॉड विंड नहीं है, नहीं तो काम ख़राब हो जाता, मैं भी फिर निकल जाता यहाँ से। अभी विंड नहीं है तो इतनी सर्दी है, अगर विंड होती तो और ज़्यादा ठंड होती। लकीली हवा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो, या श्योर आई कैन। तो यहाँ पे कुछ कपल मिल गए थे मुझे, वो बोल रहे थे हमारी फ़ोटोज़ ले लो। तो मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली हैं उनकी, और फिर मैं वीडियो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से ही। फ्री चॉकलेट, हॉट चॉकलेट और चोरोस मिल रहे हैं। Thank you so much. It's one of my favorite songs to sing. Okay, that was NESS, I think. This next song is called Going, Going, Gone. Going, 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 I think. फिर 8:10 को रोजीना आने वाली है। थोड़ा सा आपको ये गोइंग गोइंग सुनाता हूँ। Can't tie them up and leaving like the changing of the seasons. Good things are coming and they go. Like a runaway southbound train, like an Arizona desert rain, like a lightning in the sky, like fireworks in July, like a left field home run ball, like a whiskey shot in last call, like she was made for moving on. That girl is going, going, going. I can tell it wasn't meant to be, 'cause maybe meant to be's misunderstood. You can't hold on and let go, change the way the river flows. Loving her is like roping in the wind, like a runaway southbound train, like an Arizona desert rain, like a lightning in the sky, like fireworks in July, like a left field home run ball, like a whiskey shot and last call. It's like she was made for moving on. That girl is going, going, going. The cowboy was kinda cute, but his boots walked way miles away. Too long, today. How hard can it be to find a man, one who gets me, takes me as I am? Tired of waiting, sick of trying every day to quit gaslighting. How hard can it be?
How can he get it? How can he get it? Can you give me? ईमेल, ये फिर ईमेल भी मिलता है इनको, फ्री है ये। Just as long as you'll always be there. How hard can it be to find a man? One who gets me, takes me as I am. Tired of waiting, sick of trying. Every date ends with gaslighting. How hard can it be? How hard can it be? Wow, amazing. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I love you. I love you too. This is my last song of the night. Thanks again for having me. My name is NESS. And I hope to see you guys real soon. Okay. NESS. Sing along if you know this one, and I know that you guys do. Now that she's back in the atmosphere, drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that there's kind of change. Now that she's back in the atmosphere, I'm afraid that she might think of me as plain old Jane. Told a story about a man who was too afraid to fly, so we never did a land. Tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way and see the lights all faded and that heaven is overrated? Tell me, did you fall for a shooting star? One without a burning scar? And did you miss me while you were looking for yourself out there? My name is NESS. Have a great night, everyone. Ladies and gentlemen, give it up one more time for NESS. We still got a lot more music happening here. We're going to be going back to the 90s in just a couple of minutes. Make sure you get your hot chocolate and churros over in that corner there. And over here, we've got free photos going on. I don't see a lineup, so I guess you can start building one up. More music coming your way in just a little bit. Folks, the square is the place to be for Valentine's Day. We'll see you in a bit. He took me back to East Atlanta. ओके, मैंने सोचा थोड़ा राउंड स्क्वायर का भी लगा लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी ब्रेक चल रही है, नेक्स्ट आर्टिस्ट आने वाला है। तो जब तक नेक्स्ट आर्टिस्ट नहीं आता, मैंने सोचा यहाँ पे आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ। डंडास स्क्वायर में बहुत सारे लोग हैं, अभी रात का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। लेकिन वैलेंटाइन की वजह से ही कोई इवेंट में रुकता नहीं है, हर बंदा बिज़ी है। बहुत सारे लोग हैं चारों तरफ। और -10 सेल्सियस है वेदर इस टाइम। अभी आई थिंक 3 आर्टिस्ट और रहते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा उनका भी आपको म्यूज़िक सुनवाता हूँ और उसके बाद आई थिंक इवेंट एंड हो जाएगा। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है,
बोन चिलिंग वेदर है। म्यूज़िक चल रहा है अभी भी क्योंकि ब्रेक है। तो फिर मैं मिलता हूँ जब नेक्स्ट आर्टिस्ट आएगा। लेट्स सी कि वो क्या म्यूज़िक प्रेजेंट करते हैं। अभी भी ब्रेक चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आर्टिस्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन लोग फिर जाना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि इनकी ब्रेक भी काफ़ी लंबी हो रही है। ऑलमोस्ट हाफ आवर की तो ब्रेक है। हाफ आवर ब्रेक में म्यूज़िक चला रहे हैं नॉन स्टॉप। और वो जो 5-6 लोग थे स्क्वायर में वो भी जा चुके हैं। आप देख सकते हैं टोटली एम्प्टी हो चुका है। और अभी भी 3 आर्टिस्ट और रहते हैं इस इवेंट के जिन्होंने परफॉर्म करना है। तो मुझे लगता है एंड में सिर्फ मैं ही रह जाऊंगा सुनने के लिए और वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सब लोग जा चुके हैं। सिर्फ ये देखें सिक्योरिटी वाले घूम रहे हैं 3-4, और ये वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं स्क्वायर से बाहर, क्योंकि आई थिंक अगर वैलेंटाइंस डे ना होता आज शाम उसकी तो लोग यहाँ पे होते। हर बंदा बिज़ी है और म्यूज़िक चल रहा है नॉन स्टॉप। अभी आई थिंक नेक्स्ट डीजे आने वाला है परफॉर्मर, लेकिन स्क्वायर टोटली एम्प्टी हो चुका है। पहले जो 5-6 लोग थे वो भी चले गए हैं। और लेट्स सी कि नेक्स्ट आर्टिस्ट कैसे सिंग करता है, क्या परफॉर्म करता है। मैं थोड़ा थोड़ा उसको रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं उनके पूरे सॉन्ग्स रिकॉर्ड करूँगा। तो लेट्स सी, आई थिंक स्टार्ट होने वाला है। मैं करीब जाता हूँ इस स्टेज के। We still got more music that's going to be happening here. We still got a lot more great acts who are going to be performing here at the square. So please make sure you come on over. I know there are folks across the street over by the Eaton Center. I know it's kind of warm there, but really the heat is all about being here. We've got great music. We're going to go back to the 90s very soon. Also, we've got some hot chocolate happening over there in Charles, so make sure you head over to the truck, grab some. We've got a photo booth happening over there, right in that corner over there. He's all lonely. I'm going to wave over at him. He's waving back over me. Head over there. Those photos are free. So head on over. I can see people over by the bus over there. They're crossing the streets. They're going, I don't know what to do tonight. It's Valentine's Day. Some people are with their significant, some ain't with anybody. And they're just like, I'm out tonight. I need to do something before the big storm happens over the weekend. I need to have a good time. Right here is the place to be. So come on over. You ain't gonna be charged a thing to hear these great artists, because I'm telling you something. If you come on over now and see these great artists, in about a year or so, you're going to be going, thank goodness I saw them here at this time. Because in about, what, a year from now, you're going to have to pay some big-time tickets to see these acts. This is why we put them on here. We are celebrating artists from Toronto, from London, throughout Southern Ontario. This is why we do this. These are the next generation of superstars, Juno Award nominees, Juno winners. They are performing here for you, especially knowing how cold it is. In fact, the act that's gonna perform next came all the way from London.
Do you know what it's like to perform, to drive all the way to London here, knowing you've got like Mother Nature messing with you? They want to be here to perform for you. So all you guys from across the street, over in the corner there, coming out of stores, restaurants, come on over. Check out the great music that we're gonna have here. What a way to enjoy the long weekend, because Family Day, I don't know if y'all gonna be getting out, because I know like you, same thing with me, I'm gonna be shoveling away. But look, we got no snow over here except the little hills if you want to enjoy yourself there. The heat is gonna be up on this stage. And I'm telling you something, this act, there's another one, and then there's another one right after. This is the place you wanna be. So folks, come on over. Like I said, we got some hot chocolate and great food happening over there. We got our lonely photo booth over there. They want to start taking some great pictures, and you know they do it on this new way. So head over there and get your pictures done. And then when we're done at 10 o'clock, you can head over into the subway any other way. But this is the place to be. So come on over, enjoy yourselves, bring your friends, call them up, say, hey, where do you want to be tonight? The square, you want to be down here, because they're putting on a great act and great music. And in fact, they're going to be here, I do believe it's like all weekend long. And all the things that you're kind of seeing here tonight, I do believe is running till March 16th. So come down here. Come on over, folks. Great music about to happen. Great acts. You're going to love all this. This is the place to be. We'll see you in a couple of minutes. तो वो आदमी अभी थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था कि ये न्यू आर्टिस्ट हैं यहाँ के, लोकल टोरंटो के, और एक दिन यही आर्टिस्ट फेमस हो जाएंगे और तुम लोग फिर टिकट्स लेके लाइन में खड़े होगे इनके लिए। अभी लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप देख सकते हैं साइडों पे इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन जहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है वहाँ पे कोई भी नहीं है, सब जा चुके हैं, खाली है। और अभी भी 3 आर्टिस्ट रहते हैं परफॉर्म करने वाले। तो आई थिंक मैं लकी हूँ कि मैं इसका पूरा व्लॉग बना रहा हूँ, और जब ये लोग फेमस हो जाएंगे तो आई थिंक मेरा व्लॉग ही सिर्फ रहेगा ऑनलाइन, कि स्टार्टिंग में मैंने इनकी वीडियो बनाई थी। बेशक मैं पूरे सॉन्ग कवर नहीं कर रहा क्योंकि टाइम फिर व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी ब्रेक चल रही है, नेक्स्ट परफॉर्मर आने वाला है आर्टिस्ट। तो न्यू आर्टिस्ट हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए, और स्पेशली ये लोकल हैं यहाँ के। कोई लंदन से आया है, कनाडा में भी एक लंदन है, ये इंग्लैंड वाला लंदन नहीं है, टोरंटो से बाहर एक और सिटी है लंदन। तो सभी कनेडियन है, लोकल हैं यहाँ के आर्टिस्ट। और इवेंट बस ख़त्म होने वाला है, लोग तो ऑलमोस्ट जा चुके हैं, लेकिन इस साइडों पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी जहाँ पे इवेंट हो रहा है वहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली हो चुका है। और वहाँ पर अभी म्यूज़िक की ब्रेक है, इसलिए मैं नहीं जा रहा क्योंकि फिर कॉपीराइट का क्लेम आएगा। और जो लोकल लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, मैं तो पहले उसको ऐसे ही रहने दूँगा, उसके ऊपर नया म्यूज़िक नहीं डालूँगा। आई होप मुझे कॉपीराइट नहीं आएगा, और अगर कॉपीराइट आ गया तो फिर मैं मजबूरन इनके म्यूज़िक को हटा दूँगा और इसके ऊपर नया म्यूज़िक लगा दूँगा। क्योंकि जो ये लोकल आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इनका म्यूज़िक ओरिजिनल वीडियो में रहेगा तो वीडियो का मज़ा है। लेकिन अगर यूट्यूब ने मुझे कॉपीराइट क्लेम दे दिया तो मजबूरन मुझे इनकी ओरिजिनल जो वॉइस है वो ख़त्म करना पड़ेगी, उसके ऊपर नया म्यूज़िक लगाना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि यूट्यूब मेरे साथ क्या करता है। मैं कोशिश करूँगा जो जेन्युइन ओरिजिनल वॉइस है आर्टिस्ट की वो ही रखूँ, उस पर नया म्यूज़िक नहीं लगाऊँ।
ओके मैं जाता हूँ स्क्वायर के पास। आई थिंक ट्रक जाने वाला है। चोरोस ख़त्म हो चुके हैं, हॉट चॉकलेट ख़त्म हो चुका है तो ये इन्होंने गमलों को साइड पे कर दिया है। ये देखें कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सिक्योरिटी गार्ड हैं। ओके ट्रक भी जा रहा है, इनकी चॉकलेट भी ख़त्म हो गई है और चोरोस भी। ओके ये कोई कंपनी है फेमस चोरोस की, तो उन्होंने अपना ट्रक लगाया था। प्रमोशन भी हो जाती है इस तरह इनकी, और इतनी सर्दी में लोगों को कॉफ़ी भी मिल जाती है। लेकिन लोग कम थे, फिर भी ये इनका स्टॉक ख़त्म हो गया था। अगर लोग ज़्यादा होते तो आई थिंक 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाता, लेकिन लोग कम थे तो फिर भी ये काफ़ी देर, 1 घंटा तो यहाँ पे रहा ट्रक। ओके ये लोग गमले वापस लगा रहे हैं, स्क्वायर को ब्लॉक कर रहे हैं। अभी फिर गाड़ी नहीं जा सकती, टायर लगे हुए हैं। ओके फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ये गमले को किस तरह मूव करते हैं, काफ़ी हैवी है तो ये ट्रक जा चुका है चेरोस का, और लेट्स सी मैं वापस जाता हूँ स्टेज की तरफ कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस कब स्टार्ट होती है। All right, Toronto, we're going to go back to the 90s. Ladies and gentlemen, give it up for Rosina B. Solomon. सिर्फ ये एक ही है। रोसिना Wonder how that could possibly be. Well, it's been about 5 months since I've seen one thought sun. Butterflies and daisies, but old to new beginnings. Not meant to stunt or grow. That's the way it goes. By my side, thought you'd be by my side. By my side, no, you're not by my side. By my side, thought you'd be by my side. By my side, sir. No, you're not by my side. By my side. No, you're not by my side. By my side. Not even the jealous type. Long as I'm yours and you are mine. What made things go awry? I'm not satisfied. You've erased the start. The way we've grown apart. All I wanted from you was love. Where's an honest hug? By my side. By my side, thought you'd be by my side. By my side, no you're not. By my side, thought you'd be by my side. By my side, oh. My side, thought you'd be by my side. By my side, no you're not. By my side, thought you'd be by my side. By my side.
that when the day comes, you won't be stigmatized. Cause at the end of the day, oh, at the end of the day, at the end of the day, fucking my body and body, you keeping a woman free, make her feel womanly, keeping it so sexy, under lock and key, that's not that she can't foresee, she wanna be with me, so she keep her loyalty, and I'm the family, she say you can trust free, it's cause of priority, this is how it's gonna be, oh na 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 na, this is how it's gonna be, yeah. Okay, next track आने वाला है इसका रोसिना का. The first song was called By My Side. We have a few more songs for y'all. We're gonna slow it back down. Are you still with me? Yes. हाँ. Rosina, next track. Baby, you don't see the art in me. Do you know how I'm feeling? So confused and lost about just how the hell I'm supposed to live without you. Baby, you don't see the heart of me. Want your loving, I need your loving, I want your loving, I need your loving, I want your loving, I need your loving, I yes, I want your loving, I need your loving. Okay, अगला song आने वाला Ladies है. and gentlemen, give it up one more time for Rosina B. Solomon. Folks, stick around. We still got more music. While you're waiting, of course, the photo booth right over in the corner there. Make sure you get your photos done. Stick around. This is the place to be for Valentine's Day. अभी फिर ब्रेक है.
ओके, सेकंड लास्ट आर्टिस्ट आने वाला है आज के इवेंट का। लेट्स सी कि वो क्या प्रेजेंट करते हैं। सेकंड लास्ट आर्टिस्ट है आज के शो का। म्यूज़िक ब्रेक ख़त्म हो चुका है और मैं जाता हूँ स्टेज की तरफ, करीब से आपको दिखाता हूँ कि नया आर्टिस्ट क्या सिंग करने वाला है। लोकल आर्टिस्ट। स्क्वायर अभी भी काफ़ी बिजी है, साइडों पे ही लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अंदर स्क्वायर में कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं। ये भी अभी आए हैं जो 3-4 अभी खड़े हैं। तो लेट्स सी के नेक्स्ट ट्रैक कौन सा आने वाला है। आई थिंक गिटारिस्ट हैं, इनके पास गिटार है, तो कुछ गिटार का सुनने को मिलने वाला है आई गेस। लेट्स सी। मैं करीब जाता हूँ स्टेज के। ये सेकंड लास्ट परफॉर्मर्स हैं, यहाँ पर आर्टिस्ट हैं। I told you we're going to have some more great music, especially coming from London, Ontario. This next artist with his band, I got to tell you something. I love the mix of music they got going here. They got folk, they got pop, they got rock. It's heartfelt. And I'll tell you something, they're going to tear this place apart. Ladies and gentlemen, straight out of London, give it up for Tyrone Traher! Let's do it. I was thinking about you last night. I miss the way you looked at me when I said this is the last time. Before I turned my back and leave, you said, "Oh, you're a problem that I don't understand. You got away with your words and I'm right in your hands. Oh, there's something about you, you got a dangerous look, and now I'm breaking my rules 'cause you don't play by the book. I've got this fire burning inside me. Whoa, and I love hang out your closet leave. Now we're fucking in the moonlight. Oh, pretty baby, you turn me on when you're looking like you wanna bite. And I've been waiting for so long. Well, now you want Cupid 'cause you love who I am. Yeah, I play old guitars and I sing in the band. Oh, something about you, I don't wanna be good. You've got me all fired up, so you gave me that look. I got this fire burning inside me. Whoa, and I love the way you call it me. And all I want is the way you make me feel. Oh, and I love the apples that I was begging for you last night. Let's fucking dance. आई थिंक गिटारिस्ट को लोग पसंद करते हैं, लोग जमा हो गए। Oh, I hate myself. I knew you were a bad idea, and you won't admit how your flaws came in between us. No, and God has his ways of turning sinners to believers, and he shook my faith when he killed the man I needed. Oh, this can't be love, how we treat each other, but how could I know? Oh, every woman I've loved ran like my mother. I'm better on my own. I won't beg for you now. I'm standing on my feet. You can't hurt me anymore. After all I've seen, I can't
the people. I'm standing on my feet. You can't hurt me anymore. After all I've seen, I can't live like this. What do yourself believe? If I'm still in your heart, break it when you leave. Alright, what's up? My name is Tyrone Traher. These guys are the Rottweilers. This is my band and this is my life and my words. This next song I'm gonna have to tune up real quick, but it goes all the way out to Huron County. It's called Blonde Hair. It's about an old lover of mine. Yeah. This is my first time playing in Toronto, so thanks so much for being so good to us. Let's fucking go. Something about your blonde hair, and I said don't say I'm not your man, because I'm never moving on, girl. Oh, I'm so torn up and only you understand. 10 shows, ring up on my nose. I'm a 6-string singer, honey, everybody knows. I don't care if I'm misunderstood. Fill my shoes, I don't think that he could. You're only with him while the music's not ready. I'm a 6-string singer and my heart is getting heavy. Something about your blonde hair. I said don't say I'm not your man. I'm never moving on, girl. I'm so torn up and only you understand. I'm sorry for my honesty and promises I couldn't keep. Can't take it any longer. Am I too late? Girl, sure I care. Dead broke, never covered it up. I'm at a point in my life where I'm never enough. And I hate what I put us through, but you were lying to me while I was honest with you, girl. And no words could ever change what I've done. I don't deserve a chance, but I'm singing for him. Something about your blonde hair. I said don't say I'm not your man. I'm never moving on, girl. Thanks so much. This next song, it's kind of a personal one. So I mean, it's more than a personal one. I guess it's the first thing that I finished writing after my father died. And if there's anything I learned about, I guess about life and what it means to truly be a man, I learned it all from him. And I guess what I learned, through watching him, was that when there's nothing else and all hope is lost, you got faith. You know what I mean? And I'm not a Bible thumper. I'm not here to convince anybody of anything. But I'm telling you right now, prayer changes things. And I've been praying my whole damn life. And this song, it's called Highway Back to Him. And I wrote it in a chapel when I was 22 years old. My father died, and I felt like I had fucking nothing. You know what I mean? So, fuck, I'm getting emotional. So yeah, as much as it's about my journey back to faith, it's also about my father. You know what I mean? Is him God or is him my father? It's kind of both. You know what I mean? I'm not Tyrone Traher. I'm Tyrone Traher, the goddamn second man. Period. So this song's called Highway Back to Him. I hope you like it. Strong, but my flesh is weak. The
wood is hollow beneath my feet. The skin I lust will stain these hands, and what I've done is who I am. So wash my body of my sins. I'm on the highway back to hell. I'll drive all night just to feel you. Spirit guide me home. Kingdom come, hallelujah. Forgive my sinful soul. Last performance, Junko Daydreamer. लास्ट परफॉर्मेंस है, जंको डेड्रीमर बैंड है। about loving someone like a fetish. This ain't that healthy, giving out flower shit. I'll tell you what.
ये तो था आज का इवेंट यहाँ पर। ये लास्ट बैंड था जंको ड्रीमर। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। आई होप आपने भी इन्जॉय किया होगा इस इवेंट को। मिलता हूँ आपके साथ अनदर व्लॉग में अनदर लोकेशन पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। यल्ला बाय।